अब भारत से रूस की दूरी को रेल से तय किया जा सकता है। जी हां, जल्द ही भारत को रूस और मध्य एशिया के देशों को जोड़ने वाला नया उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा तैयार होने वाला है, जिसके तैयार होने का अनुमान 2017 तक लगाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जल्द ही भारत और रूस के बीच रेलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और इसी के साथ ही भारत से रूस और रूस से भारत रेल से आना जाना संभव हो जाएगा। यह रेलगाड़ी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और फिनलैंड के हेलसिंकी नगरों से चलकर भारत के मुंबई तक सफर तय करेगी। इसका पहला परीक्षण आने वाले 3-4 हफ्तों में किया जा सकता है। रूस रेलवे के उपाध्यक्ष एलेक्सांदर मिशारेन के मुताबिक पहले इस नए रेल मार्ग पर मालगाड़ियां चलाकर देखी जाएगी और पहली मालगाड़ी मुंबई से आगामी 7 अगस्त को मॉस्को के लिए रवाना होगी। मालगाड़ी के सफल संचालन के बाद मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच यात्री ट्रेन की भी शुरुआत की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि इस नए रेल मार्ग का रास्ता किन किन देशों से होकर गुजरेगा। मुंबई से यह रेलगाड़ी पानी के जहाज से ईरान के बेंदेर अब्बास बंदरगाह तक पहुंचेगी। इसके बाद यह रेलगाड़ी ईरान के रेश्त शहर तक जाएगी। चूंकि अभी ईरान की उत्तरी सीमाओं पर बसे रेश्त और अजरबैजान के सीमावर्ती शहर अस्तारा के बीच रेल लाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस मालगाड़ी पर लदे सारे कंटेनर सड़क मार्ग से अस्तारा ले जाए जाएंगे, जहां से इन कंटेनरों को फिर से रेलगाड़ी पर लाद दिया जाएगा और मॉस्को रवाना किया जाएगा। इस तरह उत्तरी दक्षिणी गलियारा नाम के इस रास्ते को पहली बार इस्तेमाल करके देखा जाएगा। अजरबैजान रेलवे जल्द से जल्द अस्तारा से ईरान की सीमा तक रेल लाइन बिछाने का काम पूरा करेगी। अजरबैजान रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस साल के आखिरी तक 8 किलोमीटर के इस टुकड़े पर रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इस रास्ते पर रेलगाड़ी चलाने की पहल कैसे हुई और इसके शुरू होने के बाद व्यापार और यात्रियों को क्या क्या फायदा मिलेगा। अभी मुंबई से मॉस्को तक माल पहुंचाने में 40 दिन का समय लगता है। इस रास्ते के बनने के बाद मुंबई से मॉस्को तक पहुंचने में कुल 14 दिन का समय लगेगा। तब तक ईरान और अजरबैजान रेल मार्ग को आपस में जोड़ने के बारे में एक समझौता भी कर लेंगे। उसके बाद इस उत्तरी दक्षिणी गलियारे का बड़ी सक्रियता से इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 12 सितंबर 2000 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूस, ईरान और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारा उत्तरी दक्षिणी का निर्माण करने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में 2000 में अजरबैजान भी इस समझौते में शामिल हो गया और वह परियोजना में सहयोग करने लगा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा परियोजना के अंतर्गत रेल लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद यह गलियारा अन्य वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्गों के मुकाबले बड़ा फायदेमंद साबित होगा। इस गलियारे की वजह से फारस की खाड़ी से यूरोप तक मालों की ढुलाई बहुत कम समय में और बहुत कम लागत पर होने लगेगी, जिससे बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा। डीबी लाइव के लिए मॉस्को से अनिल जनविजय की रिपोर्ट। बेशक इस गलियारे के शुरू हो जाने से भारत को काफी आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है। साथ ही आसानी से रेल मार्ग के जरिए लोग भारत से रूस तक के सफर को तय करेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।
On Wednesday, January the 15th, 2014, a passenger train derailed just outside Hilversum station. Due to a defect switch, the rear section of the train was suddenly directed onto the adjacent track, as a result of which the train derailed. A number of passengers suffered minor injuries, while serious material damage was caused to the track infrastructure and the train. How can a defect switch lead to a serious incident like this? The Dutch Safety Board conducted an investigation into the accident. The train carried around 550 passengers and was travelling from Enschede to Schiphol Airport. After a short stop in Hilversum, it passed switch 3B, just after the railway level crossing. Because of the defect switch, the rear section of the train was suddenly directed onto the adjacent track, as a result of which the train derailed. A train travelling in the opposite direction was successfully brought to a standstill, thereby avoiding a collision. A switch has two movable ends, the switch blades. They are operated by a point machine, in this case an AB switch. This point machine was equipped with a release mechanism containing a ring. Technical investigations revealed that the train derailed because this ring broke suddenly due to fatigue. First of all, the ring revealed finishing defects, making the ring more susceptible to fatigue. Furthermore, the fatigue fracture arose because over a long period of time, the ring was exposed to additional forces coming from passing trains, hitting the switchblades with their wheels. This hitting action caused the switchblade to oscillate, thereby applying additional forces to the point machine and to the ring, for which it was not designed. The flangeback contact of the wheels was caused by poor maintenance. Various parts of the switch were so worn that they could no longer support the blade shifting. As a consequence, when shifting back and forth, the switchblade experienced so much resistance that it remained too close to the rail. This in turn meant that the wheels of passing trains regularly scraped along the switchblade. When the ring finally broke, the blade worked loose, causing the train to derail. The wear to the switch did not occur overnight. Maintenance could have led to repair. This was not the case. The investigation revealed that ProRail did not see any safety risk in flangeback contacts, and as a consequence, did not consider it necessary to prevent them. Insufficient lessons were learned from several previous train accidents. For example, a scenario comparable to that in Hilversum occurred in a train derailment in 2007 in Greyrig, England. If the knowledge of this serious accident had been utilised, the parties could have known that flangeback contacts represent a safety risk that needs to be managed. Instead, the maintenance regulations imposed on contractors by ProRail were insufficient to prevent flangeback contacts. In this respect, the Dutch Safety Board notes that maintenance, more strongly than in the past, focuses on preventing train disruptions. Because the wear of the switch parts supporting the blades and subsequent flangeback contacts did not lead to such disruptions, insufficient attention was paid to these parts in maintenance. On the basis of its investigations, the Dutch Safety Board has issued the following recommendations. Tighten up regulations governing the maintenance of switches in such a way that flangeback contacts are effectively countered. Organise railway maintenance in such a way that the safety risks are explicitly and demonstrably managed, irrespective of other interests, such as availability and costs. Ensure that relevant information is available to the various chain partners, and encourage active knowledge sharing on incidents. ProRail and the maintenance contractors must together ensure an up-to-date and complete picture of the technical condition of the railway infrastructure.